Anil bhai, Gaurav, Ketan, let's have. I felt that we have always been doing too much of panel discussion, but a lot of people know that I started something known as Kapshap during the lockdown, and that's where it was a platform where it was we used to casually be talking about what is happening, and I feel that talking what happens behind the scene, Pankaj, I am in absolute agreement, Pankaj bhai, with you. I think so. कितनी बार हमने झगड़ा किया है और झगड़ा भी हम ऐसा है कि बड़े रूठे हुए झगड़े कर रहे हैं बिकॉज हमें हमेशा हाइट चाहिए होती है इनको हमें नीचे से हाइट चाहिए उनको ऊपर से हाइट चाहिए बीच में हम कुछ नहीं तो तलवारें निकाल के बैठ जाते हैं आई विल टेल यू वन इंसिडेंट पंकज वी आर डूइंग वन होटल फॉर अ डेवलपर इन मुंबई एंड वी सेड we can't allow you. They made a size of a shaft which was more in depth. Somebody, we are not doing the architecture, but somebody else did it because in the team and they presented us. We said, no, we don't want that depth. मीटर का डेप्थ चाहिए नहीं हमको आप 600 का डेप्थ दे दो लेकिन लेंथ बड़ी दे दो you know they came back to us with a long mail why are you changing it our MEP consultant I said your MEP consultant would be more happy if you give him a longer length than larger depth. It took me nearly 2 hours to convince him only because there was a difference of around 1.5 square feet of area which was coming free of FSI from each of this shaft. So it is not only you who face it, but we also face the similar kind of situations in that. मैं हम यहाँ ना सब वी आर ऑल come to a point where we have done invested huge amount of energy in hospitality industry. I started my practice 36 years back, but for last almost 26 years I have been doing hospitality. And I'm so sorry, I just want to share with you, but that time and Anil is much before me. He started his practice in hospitality 10 years before me. So if you look at it in that scenario, that was a time when at least architects were accepted, but interior designer, so Indian interior designer का acceptance ही नहीं था hospitality में. So we have come a long way, and I think so it is a time that we share a little bit कि क्या होता है. हमको कोई सबको किसी को लगता है कि हॉस्पिटैलिटी बड़ी आसानी से हो जाती है वो नहीं होती है वो उसको हर चैलेंजेस उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस है और उस चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए हमको काफ़ी एनर्जी और एफर्ट लगते हैं मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि आई वेंट टू अ ब्रांड आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड कपल ऑफ होटल्स आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू स्टार्ट विथ IHCL Taj, popularly known as Taj. I started there and I must have done 10-15 projects as a local consultant and as a principal consultant designer also. After having done so, I went to one international brand which came with a huge fund in India to re-establish themselves. They were existing, but they re-established. You know, the guy from the technical services told me that, sir, I'm sorry, but our international office will not accept Indian designer. I said, why? और मुझे ये जवाब दिया गया कि probably they are not happy with the way the projects are delivered. I said, after having delivered an Indian chain, the most reputed chain in the country, somewhere I have delivered them 10 completed projects, you are telling me that we can't deliver it. So that is a war we waged, and I think so that is what we have fought for last 25 years, then that's where we exist now. And now I think so we have much more larger opening. Anil, आप बताओ मेरे को क्या आपने जब प्रैक्टिस चालू किया तब क्या हाल था? I started in 89, way back. The first hotel was Pune when Prakash Mankar was there with me. That was a blessing in disguise. PCM Shaw
we did a good job there. But as far as architecture was concerned, there were only always very few architects. आज But भी there हम were लोग interior बहुत कम designers. है, आज भी हम लोग बहुत कम है. Correct, correct. But all the time, the brands, the problem is with these brands, they just think that we are incapable of doing even a fair field. While you've done Marriott, you've done JWs, you've done everything else. But the problem is because I think they're governed by somebody else, maybe it's not in their hands, but still. So all your experience doesn't help you. I've done by now, I think, somebody was telling me our office has done about 130 hotels, out of which almost 90 are standing. And all brands, I mean, Hyats and JWs and you name it, they're there. Khyber is the biggest iconic because it doesn't have a brand. Why Khyber became iconic? Because there was no brand involved. So that's how you work with it. See, and secondly, when I started, when I was doing, because I was quite old hat, all these guys just grew up, all these kids who just came to the brand just grew up in front of me. So we had made sure in our practice that we will not do second fiddle to any other architect. If that owner is hiring, see what is happening is these guys go take some concepts from somewhere else, pay whatever 10 times the money that they will pay the full architectural service, and they come back here, work with somebody local who has no idea about how to make a hotel. That's how the projects go wrong. Even brands also will not stop from that from happening. They won't say, okay, you become second architect. We say, no. You cannot do justice to any project unless you make it all the way through. How can you deliver? How can a project, unless you are involved all the way? I mean, I've never sold my design concept to anyone. I never do that as an architect because that's not the right way to practice. So we've been through it, we've done that, we've seen this, but still managed to shine and create those projects which are becoming landmark and which will be there. So it's a fight for everyone. And it's a fight. Architecture in any case is a fight. I mean, you have to always go on fighting. Even if you are doing whatever work you're doing, it's very difficult to get your money from your clients. It's very difficult to chase them because we are not cut out to be dealing financially. We think we are creative and we actually are. So we have to have somebody to get your fees on time. Then a lot of other issues. So we are never trained for that. I am agreeing to that we are not trained. We are using only left side. We have to start using the right side in order to make a more successful practice. Gaurav, you come with a very different when he says that the collaborative practices. Now, I think so. Your practice is a very, very nice and a very, I would say, a set of example which you can set by the tab with Peter, that Joy Design. So how do you frame and look into that, and how does it help you? So I would just take a cue from what Mr. Sharma said. I rather followed Mr. Sharma's footsteps unknowingly about something. So I was introduced to Peter by IHCL at that time. And while we both were rather, while I was introduced at that time, Peter came up to me and he said, Gaurav, let's do 2 projects in collaboration. 2 projects karte hai, Vivanta, Ginger, jo bhi hai, theek hai. And I told him, I would not let a third person come into my country, sell my expertise to be a local designer, to have that local expertise and easily have a cakewalk to finish a project and hand over in the country. Sorry, this is not what I'm doing. And then he immediately came back and he asked, what do you have in your mind? And I answered back to him, I say 80% of our projects are going out of the country. It's all Hong Kong, Bangkok, Singapore, where all the design is being done. And there are very few Indian interior designers. I look at setting up a practice which has a base and an opportunity given to the owner to decide. They need a concept from Hamburg, okay, they can take it. They don't need, India office is very much there. You can take it all from there. So we are an open office. We let the owner, we let the budget, we let the money decide what they want. Your practice is giving a lot of options as such in terms of bandwidth, in terms of numbers also and value also. Absolutely. That's a great thing. But हमारे पास हमारी जो practice है उसमें
हमारे पास दो ओनरशिप है, एक ब्रांड है और एक जो चेक साइन करता है और एक चेक बनवाता है. सो दोनों के बीच के अंदर मेरे ख्याल से केतन यू हैव अ प्रैक्टिस विच इज फेयरली लार्जली आउट ऑफ कंट्री एंड यू आर वर्किंग विद ओनर्स ओनली, नो ब्रांड. सो हाउ डू यू फाइंड इट? कैसा एक्साइटिंग लग रहा है कि हमारे हमारे बिकॉज वी आर एज अ फ्रेंड वी कीप ऑन शेयरिंग लॉट ऑफ थिंग्स, हाउ थिंग्स मूव अराउंड. सो कैसा यू यू फील गुड, बैड और अगली? Yeah, no, not ugly at all. I feel extremely happy when there is no. See, when brand gets involved, there's a lot of interference come along with it, and there are a lot of restriction also comes along with it. So we have to design everything within that framework. So here, when I'm working directly with individual clients, I have a lot of leverage in creating my own design, the way I want to create, and I've been very fortunate. When I design for individual client, my budget is also not restricted. So this client has got always an aspiration to create something better. So it is either they are doing for the first time, they want to show something, they are having something extraordinary in their palette. So they are allowing me to spend whatever money. And that has given me an enormous result. So I am super happy about doing that. पंकज भाई आप बड़े मुस्कुरा रहे हो इसके ऊपर. ये सब जितने भी क्वेश्चन पूछे ना, इसका एक सारांश तो बताओ मुझे, आपका क्या कहना है? नहीं, यदि किसी भी ब्रांड के साथ काम करते हैं तो हमारे पास दो तरह के प्रेशर होते हैं, एज यू राइटली सेड, कि जो भी पर्टिकुलरली इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके पूरा बाइबल है स्टैंडर्ड्स को हमको कंप्लाई भी करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम फायर एंड लाइफ सेफ्टी, विच बिकम्स अ बिग चैलेंज. बिकॉज जो भी ब्रांड्स हैं, आप हिल्टन लो, हयात लो या मैरियट लो या एनी अमेरिकन ब्रांड, इंसिस्ट फॉर फायर एंड लाइफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर विच आर NFPA compliant, which are internationally acclaimed. While my owners many times they are very happy with getting a CFO certificate, and you know how CFO certificates are taken in the country. So it is a very big challenge that to make them understand that a pump which is internationally approved or a light fixtures which has to be a ULFM approved cost 2 to 3 times more. And we always get praised कि भैया, और जब एज ए आर्किटेक्ट है हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें PM से भी डिसाइड करते हैं. उन्होंने एक नंबर दे दिया क्लाइंट को कि मैं आपका होटल बना दूंगा, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर MEP पे आता है, क्योंकि इंटीरियर तो उसको करना ही है, खर्चा का बिल्डिंग तो बनाना है, तो बच जाता है MEP, तो बचा हुआ सारा कैची हमारे ऊपर चलता है. और उसके साथ यदि इंटरनेशनल ब्रांड्स को सेटिस्फाई भी करना है, बिकॉज प्रोबेबली दे हैव अप्रूव्ड PDA और एनी ऑफ माई कलीग कंसल्टेंट्स, I have to make sure that there are no dilution on that front. So it becomes a big pressure, because ultimately, as you rightly said, my payment is not being given by Hyatt or Hilton, it is being given by that owner. And if he gets the impression that I am making him spend huge money for a cost, because उनके यहाँ ऐसे भी होशियार लोग होंगे कि जो मार्केट से पता करेंगे पंप की कीमत तो धारकर साहब 100 रुपये थी, आपने तो 300 रुपये दी थी. Unknowingly he is giving an impression, and that impression is gone to client's mind. It is very difficult to remove that, to make them understand that this is because of brand's requirement, such and such features, technical features, we have to spend this money. So it is a very, very challenging, and it is, I think, I would say 99% of the project, we come across such cases where I have to also take care of client pocket and also satisfy the brand. So it becomes, I think, to understand brand side and to understand clients' desire to spend is extremely important. And if you go wrong, then I think it becomes a very bad case. So we always try to read the client much at early stage to make sure that we go rightly on the project. So मैं एक एग्जांपल देना Can चाहूँगा. I just add something to it? See, Mr. Darkar sir, whenever we design this kind of hotel, but today we all designers are quite matured enough not to compromise on your layout. So we are ready to settle with our design. So it is not always that designs are getting your project is only getting compromised. We are also ready to accept what is right, and accordingly we plan it everything. नहीं, मैं शायद ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपको कि पर्टिकुलरली फायर एंड लाइफ सेफ्टी में जो डेविएशंस आ सकते हैं. सो मीन्स आई एम श्योर एवरी आर्किटेक्ट हियर टुडे अंडरस्टैंड्स
fire laws pretty well, better than, and that understanding has always improved. And आज से 20 साल 25 साल पहले जो पोजीशन थी और आज आप सब लोग जो काम कर रहे हैं उसमें तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि हमको पता ना हो. यदि मैं गौरव जी के साथ भी काम कर रहा हूँ या खोजेमा के साथ भी कर रहा हूँ तो ये तो बेसिक है. आप भी जब आपका स्टैंप लगा रहे हैं एज ए आर्किटेक्ट यू विल नॉट लाइक एनीथिंग टू बी इलीगल, राइट? सो बिकॉज यू आर ओनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो वो तो कहीं डाउट ही नहीं है सर. पर जो ओनर है वो कई तरह के डेवलपर्स या बिल्डर है जिसने ये देखा है कि दूसरा, और वो एग्जाम्पल भी ऐसे देते. अभी सर से बात कर रहा था कि ड्राइवेज नहीं है 6 मीटर के और वो बोलता है मेरी सिटी में तो जयपुर में 4 मीटर में ही हो जाता है. धारकर साहब आप क्यों 6 मीटर और 8 मीटर की बात कर रहे हो? वहाँ से झगड़ा चालू हो जाता है. तो fundamental actually is completely misunderstood in the country. We blame the brand, we blame the courts, we blame this, blame that. While as a professional, as an expert, it is your role to decide whether brand may be wrong. That's not something which has been written by God. That's not a gospel truth, right? As a consultant, I know what is right. करेक्ट. I should be able to convince the client to go for what is right. Absolutely. Irrespective of who is saying, brand is saying, this guy is saying, that guy is saying, I don't care. Whether, see the 6 meter thing, NBCC is also, I tell all this to all the consultants, especially MEP consultants. They always come back to me, sir, NBCC says this, NBCC. I said, where is written that NBCC is Mandatory. It's mandatory. It's only recommendatory. You are, see, unfortunately, in this country, the biggest tragedy is because there is no liability. If you are taking money by providing a service, liability is yours. It is not the brand's. It is not what the brand has written. If there was a legal liability issue, the owner could have sued you. Oh, why you specifying this extra cost budget, whatever. So ultimately, the professionals have to decide what is right and should be able to convince the owner. सर सर, उसका भी आप तो एक liability सॉल्यूशन है की- ना. लायबिलिटी के लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी ले लेते हैं ना हम लोग आजकल. अरे पर सर बात तब आती है जब लाइबिलिटी कोई डिफाइंड हो. यहाँ पे बिना प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग भी यदि कंसल्टेंसी कर सकते सर, हैं. मैं- यदि आपके ऑफिस से निकला हुआ ड्राफ्ट्समैन भी या मेरे ऑफिस से निकला हुआ ड्राफ्ट्समैन 11th पास आदमी भी यदि डिजाइन कर सकता है और उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा हो सकते हैं तो उस कंट्री में आप लाइबिलिटी की क्या बात करोगे? नहीं सर, यानी यदि वो आप एक- समझिए मैं क्या एक बोल रहा बात हूँ. ऐसी है. मीन्स आर्किटेक्चर में तो आर्किटेक्ट Licensing and liabilities. कई ऐसे आर्किटेक्ट जो क्वालिफाइड भी नहीं होंगे आर्किटेक्ट, उसका स्टैंपिंग करने वाला दूसरा आर्किटेक्ट है. तो पंकज उसका भाई, क्या आप लेकिन बता मैं अपने ही एक प्रोजेक्ट की लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ. ब्रांड इंटरनेशनल है, फायर कंप्लायंस करना है, सब कुछ करने की इच्छा है. हेरिटेज पैलेस है, कैसे करूं मैं? आई कैन नॉट चेंज द हेरिटेज, आई कैन नॉट चेंज द आर्किटेक्चर ऑफ दैट, आई कैन टेम्पर विद इट. एक सिंपल एग्जांपल है कि एक अगर हमारे को एनबीसी फॉलो करते हैं तो हमारे पास 2 लाख लीटर की टैंक लगती है फायर की. जैसे ही एनएफपीए में जाएंगे 5 लाख लीटर हो जाती है. उसकी कॉस्ट का इम्प्लीकेशंस क्या होता है कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता है. वो ओनरशिप को बड़ा पिंच लगता है क्योंकि वो देखता है कि अब मेरे किसी दोस्त की किसी होटल के अंदर तो वो तो 2 लाख है यार. व्हाई इज समबडी आस्किंग एंड टू Consultant misguide एक्सप्लेन. कर रहा है. और कंसल्टेंट, व्हाई कंसल्टेंट इज ओवर इंजीनियरिंग इट. दिस इज अ रियली अ बिग प्रोसेस. अभी मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई कंसल्टेंट ओवर इंजीनियरिंग करता है तो वो एक हमारे पास है ना, एक बाइबल आती है. हर ब्रांड बोलती है कि ये दिस इज स्टैंडर्ड्स. दे प्रोड्यूस स्टैंडर्ड्स विच इज ऑफ अराउंड 300-400 पेजेस फॉर ईच ऑफ द सेक्शन. आर्किटेक्चर, इंटीरियर. गौरव, हमारा भी फोटो लेना यार, इंस्टा पे टैग जरूर करना. और एमईपी, ऑपरेशन, सबके ऊपर सबका एक मैनुअल आता है. अभी आप 400 पेज पढ़ के 300 पेज पढ़ के कौन सा हम कभी नहीं पढ़ पाते. और पढ़ेंगे तो भी क्या, वी कैन नॉट रिमेंबर एवरीवेयर. सो दैट इज द बिगर चैलेंज विच वी फेस. गौरव, मुझे एक चीज बताओ,
when you are doing projects in India, are you helping your Germany office to do some international projects also? Yeah, we are now working on some projects in Baku in Azerbaijan. So while they are working in Europe, they also are expanding in the region like Baku and Azerbaijan and stuff like that. And it was getting difficult because the taste of the people over there is slightly towards our side of the world. Right? But ये तो जो मेरे को ये माजरा हम बताइए लोग सर, मैं सर को एक प्रश्न पूछूं हाँ कि जब भोपाल में काम होता है हमें याद करते हैं, गोवा में काम होता है हमें याद करते हो, बाकू हमको क्यों नहीं ले जाते हो? यहाँ मुझे किसी ने याद किया है मैं उसके पीछे जा रहा हूँ आपको कहाँ लेके जाऊँ नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसे ही लेके चले जाओ यार। ठीक है हॉलीडे पे सालों तक जाएंगे सर बाहर के जब आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर काम करते थे तो एमईपी कंसल्टेंट भी बाहर से लाते थे। ये तो आज 15 साल में हम लोगों को कन्विंस कर पाए, पहले तो all of 25 साल पहले हमको भी अपने आप को सेल करना पड़ता। all of us So this is applicable changes to are everybody happening. No, like no. he started with the तो conversation आई विल रिक्वेस्ट सर कि आप जब बाहर काम करते हैं हमें भी ले जाइए। लेकिन Mr. Sharma has been working out of the country for the longest of the time. He's done so many international projects. शर्मा We all साहब को know मैं that. कई दिनों से बोल रहा हूँ, वो मेरे को दिल्ली भी नहीं बुलाते। नहीं नहीं वो थोड़ा बिजनेस वाला मामला ओपन फोरम में नहीं, नीचे उतर के फिर करो। लेकिन शर्मा जी आपको एक बड़ी चैलेंजिंग है, आप काठमांडू में यू हैव एन ऑफिस आल्सो इन काठमांडू, यू आर डूइंग प्रोबेबली 10-15 प्रोजेक्ट्स इन नेपाल। Yes, I am. वहाँ पे तो प्लॉट ही कितने छोटे हैं, Correct? तो उसमें क्या क्या बिठा लेते हो और कैसे बिठाते हो? आपने करा ना एक? मैंने साथ में किया करा। ना, साथ में किया, हमने तो साथ में किया। that is a- लेकिन मुझे तो पता है, इन लोगों को नहीं पता है। Correct. That plot is, I think, not even 1,000 square meter. And we've done 110 rooms. वाओ, Yes, not even 1,000 square meter. You do houses like Kathmandu doesn't have land now because as far as Kathmandu is concerned, it's very, but there are no roads, there's nothing. The entire city is 15 kilometer from one end to other end. So they have very small plots, very this thing. All the 6-meter thing is completely hoax. Do you find the 6-meter setback all around anywhere in Singapore, Hong Kong, Bangkok? What the hell? I mean, fire tender can only carry 10,000 liters of water. You are storing 5 lakh liters of water. How can fire tender, what will fire tender do? And on that height? And how can he rescue it? Your building itself has to be, if it is A-class building, if it is 100% fire compliant, what is fire tender going to do? I don't understand. You make a fire, anyway. So we have done this in Kathmandu. So we did quite a few projects which were so small. They want to do now I'm doing another 1,500 square meter plot. We're doing a Hyatt place. We're doing so all kind of things there in Kathmandu. एक्सेलेंट। It's challenging, but it is. सो शर्मा जी, मैं एक बात बताता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं ना उसमें बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कितनी जगह पे मैंडेटरी जो हमको नया महाराष्ट्र का यूडीसीआर भी आया है उसके अंदर 30 मीटर्स तक परमिसिबल है हाइट, और कितने कॉरपोरेशंस ऐसी होएगी, नगर पालिका होएगी जिसकी फायर स्टेशन में 18 मीटर से बड़ी लैडर ही नहीं होएगी। Matter ही नहीं है. Correct. सो फायर फाइटिंग चैलेंज वहाँ नहीं है, चैलेंज यहाँ है कि जो फायर फाइटिंग सिस्टम जो हम लगाते हैं वो ऑपरेशनल रहनी चाहिए, उसकी ऑडिट भी नहीं होती है हमारे वहाँ। पंकज भाई, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ सर कि ऑडिट का सिस्टम ही नहीं है। एंड आपको पता होगा कि हमने एक नया सुरक्षा इंडेक्स चालू किया है, तो अभी मैंने ताज से ही प्रेम ठाकुर साहब को रिक्वेस्ट करके कि इम्प्लीमेंट कराइए, तो वो देख रहे हैं इसके बारे में। हिल्टन इज ऑल्सो स्टार्टिंग, सो आई ये थिंक बड़ी- ऑडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जितने भी फायर इंसिडेंट होते हैं उसमें सिस्टम का फेलियर, सिस्टम लगी हुई रहती है, आइदर स्टेयरकेसेस ब्लॉक है, सिस्टम फेल्ड है, नॉन ऑपरेशनल है फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, एंड दैट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ इट। मुझे आईडी लेवल में एक चीज़ गौरव मैं आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि वो मुझे भी समझना है। हर ब्रांड अपनी अपनी कुछ फंडा झाड़ती है, बरोबर है? सो हाउ डू यू कोप अप फ्रॉम A to B, B to C, C to D? हाउ डू यू मैनेज कि भैया इसमें से डिफरेंशिएशन कैसे करूँगा मैं? We keep our emotions aside. So the new thing that I've recently learned is that
moment we get emotional, we get single track minded, right? When I involve my emotions, I want to do things like how I like it or how designers in my office like it, right? So I tell my colleagues and young ones also the same thing that, keep your emotions aside, follow the brand standard. Look at what they've thought. There is enough money, time, man hours gone behind setting up a brand standard. So if it is already set, and we spoke about this last time, let's just follow it, to the T. Like for Ginger, once again coming back to that, I told you every hotel we like to do it differently, right? But here in Ginger we don't. We made something, we just follow it to the T. So every brand, to take care of every brand, we also make sure that we keep our 100% emotions or at least 50% emotions aside, and we look at the brand standard, we follow it. लेकिन गौरव इसी हिसाब से चलेंगे तो हमारे तो इमोशंस चले ही जाएंगे नहीं, बिकॉज वो- 90% ऑफ होटल विच आर डन Like he said, Kozim, I think इस तरह से अगर चले तो आखिर ये इंटीरियर डिजाइन की प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी से खत्म हो सकती है. नहीं Because I'll tell you, Marriott is already giving package for Courtyard. They're building they're selling packages for everything. No, फॉर they योर would काइंड need- इन्फॉर्मेशन मैरिट इज डेवलपिंग फॉर JW आल्सो JW also. नो मैरियट Yes. फॉर मैरिड but, बाय मैरियट but Mr. Sharma, इसमें दो angles हैं. Like our friend here already said that, he gets some clients, those are not looking at budget. That's where we exercise all our emotions. That's where we exercise all the creative energies. Like I have done a ridiculously expensive hotel recently in Unavla. I know the owner might not justify his revenue and profits so early, he will take double the time, but we did that. That's where we experience and, creatively we went ahead on that. बेचारा मर गया ना वो नहीं मरेगा नहीं मरेगा नहीं. So, वो भी होता है, but It's always a long-term vision. yeah, So it's an aspiration only that is for working for rapid them. growth, it's a maybe. very ambiguity there is a lot of ambiguity in what is long term किसी को 6 साल बोलता है कोई बोलता है 12 साल तो उसके बेचारे की सब खटिया See, खड़ी हो जाती ROI, है. I don't understand, but basically earlier we used to say 10 years, but now it has prolonged to 15 years. अरे बाप रे 10 साल में मर तो- जाएगा कोई यहाँ होटलियर सीरियस होएगा ना वो छोड़ मनाली देगा। बंद कर मेरे देगा को लगा 15 गुजराती आदमी बोलेगा 5 साल. 5 साल. 5 साल में who will recover in 5 years? Yeah, so it's a myth so actually. so that is the reason when they say I made many hotels which have recovered in 5 years, huh? Not one. Maximum when- number of hotels. Tivoli Garden, Country in Sahabad, all kind of Khyber within 2 years. So people, they just recover. I must convey this to my client that you, You don't mu- have to wait no, actually. no. So it is the right product for right places is the most important thing. आप decide करेंगे कि मैं I will go to Thane and build a Ritz-Carlton which is never going to be working. The client is creating a funeral for himself. But as a designer, we have nothing to lose. We can create a Ritz-Carlton. But is it right somewhere or other? हमको फीस भी मिलेगी हम तो हमारा सब कुछ कर लेंगे जैसे बेचारा लोनावाला वाला कर रहा है हमने भी किया भोपाल में. Absolutely. You displayed that, sir. नहीं, वो प्रोजेक्ट मैंने वो फॉर्चुनेटली मुझे लोनावाला भी देखने को क्योंकि मैं अभी कुछ गया था इधर ही और मैं जाते जाते वापस से कहीं और चले गया डाइवर्ट हो गया बट मैं पहुंचने वाला था आपके प्रोजेक्ट के ऊपर वो देखने वाला था We'll go together. सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द फ्रेटर्निटी इज वेरी स्मॉल we wanted to have this chat so we understand that there are so many coordinations which can happen. When Anil is doing architecture and we are doing interiors, there is a hell of a task because for us it is fortunate enough Anil at least understand hospitality. But when there is somebody locally who has no experience in hospitality, does an architecture, you have a humongous task of correcting because हमारे से देखा भी नहीं जाता है कि भैया ये करेक्शन होना चाहिए ये गलत चीज़ हो रही है और उसको करेक्ट करना ज़रूरी है बिकॉज हमें पता है कि एक गलती की वजह से क्लाइंट कितना ब्लीड करने वाला है हम ऐसे नहीं देखते हम देखते हैं कि एक गलती एक लाइन की गलती की वजह से client ends up employing 2 people for lifetime, which is a huge cost. It is far more beyond a professional fees.
ऑल कंसल्टेंट, पूरे कंसल्टेंटों की फीस मिला के भी लाइफ टाइम के अंदर उससे 10 गुना ज़्यादा वो खर्चा कर देता है. And that two people, this is the resources which are going to be becoming very, very difficult in days to come. Eh, Every, every, every day it is becoming expensive and resources is exhausting out of it. मैं एक्चुअली अब ये भी देख रहा हूँ सर कि लॉट ऑफ टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ ओनर्स आर गेटिंग वेरी वेरी एस्पिरेशंस. अब सर के साथ मैं एक हिल्टन का काम कर रहा हूँ एट जबलपुर. नाउ he appoints him after the construction has crossed X levels. You are about to cast the roof slab, and then he comes to me because he recommended me कि धारकर साहब ये मेरे टॉप स्लैब कास्ट करो, मेरे को थोड़ा केवल आप स्लैब का ऊपर का ड्रेनेज का सिस्टम बता दीजिए ना क्या करूँ. तो आप यदि इस तरह के क्लाइंट है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को बड़ा ही बिल्कुल 24 क्लासी घंटे. एग्जाम्पल है, क्लासी एग्जाम्पल है. वो क्लाइंट ने हमें कहा कि सर ये फसाड दिखाया हमको कॉमन प्रेजेंटेशन में. सो हिल्टन से भी सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे, हम भी बैठे हुए थे. सो मैंने पूछा कि ये, उसने टेरेस का लेआउट भी बताया. मैंने फसाड देखने के बाद में उसको पूछा, बगल में ले जाके, बच्चा था, जबलपुर वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, नागपुर वाले बच्चे को पूछा, बेटा इसका रेन वाटर ड्रेन कहाँ पे है? नहीं. सो ही स्टार्टेड लुकिंग हियर एंड देयर. ऐसा 5 बार देखा. मैं बोला नहीं बनाया तो बना, ये फसाड नहीं चलने वाला है तेरा. पहले रेन वाटर तो पानी तो निकाल ले, तो ऊपर वाटर टैंक बना देगा क्या? और वो ओवरफ्लो होने वाले है कुछ भी. उसके बाद उसने एमईपी कंसल्टेंट देखा. उसके बाद में आपको मैं और एक बात बताता हूँ. फिर उसने हमको, क्लाइंट को रियलाइज हुआ, क्लाइंट को भी रियलाइज हो गया, बिकॉज ब्रांड ने चिल्लाना चालू कर दिया वहाँ पे. तो बोलता है खुशम भाई प्लीज़ हेल्प मी आउट. आई सेड ओके आई विल हेल्प यू आउट. वो हेल्पिंग आउट में अंदर मैंने उसको स्कीमेटिक बना दिया, सब कुछ बना दिया. उसने बोला था कि सर आप जो फीस होएगा ले लेना. मैंने जब फीस सबमिट की तो मेरे को बोलता है, बच्चा बोलता है, क्लाइंट बोलता है, अरे सर जितनी आप फसाड के लिए फीस मांग रहे हो उतनी फीस तो मैंने पूरी आर्किटेक्चर के लिए दे दी है. सो आई टोल्ड हिम बॉस सी इफ यू थ्रो पीनट्स यू आर गोना गेट मंकीज. यू नीड टू लर्न ऑल्सो. And I'm telling very openly and candidly in each and every forum that if somebody wants to learn, we are willing to teach them. We can do certain amount of projects and we can teach you how to do it, but you should be willing to learn. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे और उनके बीच में, मैं सेकेंड लेवल प्रैक्टिस भी नहीं बोल रहा हूँ, बट ही शुड बी able to come as a student because he doesn't know India. I think so. I would like to, on this note, I would like to conclude this discussion, which was a very casual discussion. Thanks for all of you coming, Anil from Delhi and Ahmedabad, Pankaj Bhai, and you guys are, both of you are from Bombay. All of you are very dear friend, and I think so. The objective behind here was that we try and share with people that there are so many issues and problems which we face during construction, especially when there is an architect which is non-hospitality architect. We have several discussions and several corrections we have to go, iterations we have to go. As an interior designer, every aspiration, and please excuse me, हम काफ़ी कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, ओनर्स की वाइफ, ओनर की साली, ओनर की गर्लफ्रेंड बड़ी ही इंटीरियर डिज़ाइनर होती है, बड़ी बढ़िया कर लेती है. वो फैब्रिक से लगा के आर्ट वर्क तक और सब कुछ, फर्नीचर के ऊपर सब कुछ एडवाइस कर लेती है. केतन बोल रहा है, केतन ने अफ्रीकन को एक्सपीरियंस किया है. As I said, I am really fortunate. So I always say involvement is good, interference is very bad. So fortunately, most of the clients are involved, but they are not interfering. Right. तो अफ्रीका में गर्लफ्रेंड या सालियाँ, बीवियाँ को इंटरफेयर करने को देने का कॉन्सेप्ट नहीं है. हिंदुस्तान में बड़ा है, तुम मत आना हिंदुस्तान में. सेंटर पे बैठी है मैडम यहाँ पे. तो क्या हो गया? वो यहाँ घर पे इंटरफेयर करती होगी ना. So thank you guys. It was a pleasure. I think so. We had really great time talking about
our experiences in the industry, and our experience we put in front of all the esteemed guests which we have over here. Thank A you round once of again. applause for everyone. She is in a rush.